In this video, we will discuss about chi-square distribution. Chi-square distribution. So, chi-square distribution. We write down the introduction of this chi-square distribution. So, the square of a standard normal variate is known as a chi-square variate. Chi-square variate with 1 degree of freedom. Degree of freedom. So we say that if x be a random variable which follow the normal distribution with the two parameter mu and sigma square, so then we write down the standard normal variate z which have the formula x minus mu upon sigma follow the normal distribution with the parameter 0 and 1. So now we can write down z square. Z square is equal to x minus mu upon sigma to the whole square is a chi-square variate. Is a chi-square variate with 1 degree of freedom. 1 degree of freedom. So with 1 degree of freedom, so now we write down the general case. So in general, xi, so here I we can take as 1, 2, 3 up to n are n independent normal variates. Independent normal variates with mean mu and variance sigma square. So this variance we write down as mu I, that means sigma square I or mu I is we write down as. So here I is also equal to 1 to n. So then chi square, this is the symbol for representing the chi square. So chi square is equal to summation of iota equal to 1 to n xi minus mu I upon sigma I to the whole square. So this is the chi-square variate with n degree of freedom. Is the chi-square variate with n degree of freedom. With n degree of freedom. Now, so this is the basic concept of chi-square. Now we move to the PDF of chi-square distribution. So we define this distribution as let x be a random variable. X be a random variable is said to have a chi-square distribution. Have a chi-square distribution with n degree of freedom. And degree of freedom. So we write x follow the chi-square distribution with n degree of freedom, and its PDF is fx
fx is equal to 1 upon 2 raised to the power n by 2 gamma n by 2 e raised to the power minus x upon 2 x raised to the power n by 2 minus 1. So here the variable x, random variable x, lie between 0 to infinity. So this is the probability density function of chi-square distribution. So PDF of chi-square distribution. So we use the gamma n by 2. So also you know the gamma function definition. Now, so we write down the next thing is if random variable x follow the chi-square distribution with n degree of freedom, so then we can write down as 1 by 2 x follow the gamma distribution with n by 2 degree of freedom, with n by 2 degree of freedom. So now we move to the moment genetic function of this distribution. So how to calculate the moment genetic function? So now moment genetic function of chi-square. So moment generating function of chi-square distribution of chi-square distribution. So let we have random variable x follow the chi-square distribution with n degree of freedom. So then we write down as mxt, moment generating function. We know the mxt, which is equal to expectation of e raised to the power tx. So e raised to the power tx is equal to, because this is the continuous distribution, probability distribution. So we take the integration 0 to infinity e raised to the power tx into fx dx for calculating the moment generating function of chi-square distribution. So now we have a 0 to infinity e raised to the power tx. So fx we have as 1 upon 2 raised to the power n by 2 gamma n by 2 e raised to the power minus x by 2 or x raised to the power n by 2 minus 1 into dx. So this is the fx. So now we evaluate this integration. So for evaluating the integration, we take constants as outside from the integration. So 2 raised to the power n by 2 is constant, into gamma n by 2 is also constant. Now we write down integration 0 to infinity. We have two terms of e raised to the power tx and e raised to the power minus x upon 2. So when base is same, so we take as e raised to the power minus. E raised to the power minus we can take as common. So this gives us 1 by 2, 1 by 2 minus t into x. और ये क्या रहा है, x का टर्म क्या रहा है, x raised to the power n by 2 minus 1 into dx. अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हम क्या फॉलो करने जा रहे हैं, गामा फंक्शन की डेफिनेशन फॉलो करने जा रहे हैं. तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? वी नो दैट gamma n is equal to integration 0 to infinity e raised to the power minus x into x raised to the power n minus 1 into dx. ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई. अब सेकंड डेफिनेशन हमारा पर्टिकुलर केस क्या हो जाता है कि अगर e रेज टू द पावर माइनस ए एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट अगर ए दे रखा है और एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होती है, गामा एन अपॉन ए रेज टू द पावर एन. अब यहाँ पर जो हम डेफिनेशन फॉलो करेंगे ये सेकंड वाली डेफिनेशन फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ई रूट पावर मान ए एस, तो ए हमारा क्या हो गया यहाँ पे 1/2 माइनस टी, ये ए हो गया. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल? So here we write down as using gamma function definition, using gamma function definition. So when we use gamma function definition, so this gives us 1 upon 2 raised to the power n by 2 into gamma n by 2, और इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी गामा n. अब n क्या है यहाँ पर, n है हमारा n by 2, तो ये हो गया गामा n by 2 अपॉन, और ए क्या है हमारा, ए है 1/2 माइनस टी और होल टू द पावर n मीन्स n/2. सो दिस इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गामा n/2 टू गामा n/2 कैंसिल्ड,
So this we can write down as 1 upon 2 raised to the power n by 2, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 2t, 1 - 2t अपॉन 2 रेज टू द पावर n बाई 2। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो 2 रेज टू पावर n बाई 2 वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n बाई 2, और इधर भी आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n बाई 2, और अपॉन में आ जाएगा, ये अपॉन में है सारा, तो दिस विल बी 1 - 2t raised to the power n by 2. So this to this cancelled. This can be written as 1 - 2t raised to the power minus n by 2. Minus n by 2. So this is our MGF of chi square. The moment generating function of chi square, which is 1 - 2t raised to the power minus n by 2. So remember this moment generating function of chi-square distribution. So we see that means gamma function play an important role for describing the distributions. That means we are using gamma distribution, we are using Vivo distribution, we are using chi-square distribution. So gamma play an important role. So now, after discussing moment genetic function of chi-square distribution, we move to the some basic properties related to that. So one is characteristic function. Characteristic function of chi-square distribution. Characteristic function of chi-square distribution. So we define the characteristic function as if a random variable x follow the chi-square distribution with n degree of freedom. So then the characteristic function we denoted as phi xt. Phi xt is equal to expectation of e raised to the power I into tx. So this can be written as integration 0 to infinity e raised to the power I into tx, or fx dx, fx into dx. So this is also equal to, अभी हमने मोमेंट जेनेटिक फंक्शन निकाला है, वहां पर क्या था, e raised to power tx था, यहाँ पर क्या हो गया, I tx हो गया। तो जो कोफिशिएंट जाएगा वी कैन राइट डाउन डायरेक्टली एज 1 - 2 it हो जाएगा, t रिप्लेस बाई आई टी, 2 it रेज टू द पावर माइनस n बाई 2। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं इजीली, इंटीग्रेशन को फंक्शन एफ एक्स का इस पर डिस्ट्रीब्यूशन पुट कर देंगे तो वी कैन सॉल्व। Okay, so now we will move to the further definitions based on this distribution. So we are discussing about the population first. Before we start the problems, so we understand what is the population. So we are using the sampling theory. In sampling theory, we know the what is the population, or we can say that the universe. So one word is population, or second word is universe. That means that is the whole group of individuals. So we define this as, so the group of individuals, the group of individuals under study
is called population. Population और universe. क्या मतलब हुआ इसका? That means we have 100 students in a college, 200 students in a college. So for a particular college, that 100 or 200 students is the population. So out of the 100 students, we are going to calculate the sample of 10 students, 20 students. So that is the sample, and a group of 100 students is called the population of the particular college. So universe, so it is maybe finite or infinite. So it may be finite or infinite. That means total population of India, total population of world. Now we are going to define second term, that is sampling. Sampling, so we define a part, किसका? Population का. A part selected from the population. Selected from the population is called sample. Is called sample. And the process of sample, process of collection, basically collection of a sample is called sampling. Is called sampling. अब सैम्पलिंग के भी कई तरीके होते हैं. दैट मीन्स रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग. So there are so many ways to take the sample. So we will discuss the distribution as chi-square distribution. So now for solving the problems. So chi-square distribution. On the basis of samples and population. So for sampling distribution, that means अब यहाँ पर आपको 1 हो गया सैंपल और सेकंड क्या होगी? पॉपुलेशन. पॉपुलेशन और यूनिवर्स. तो पॉपुलेशन के लिए क्या होगा? स्टैंडर्ड पैरामीटर यूज होंगे और यहाँ सैंपल के लिए सैंपल पैरामीटर, बेसिक पैरामीटर्स. दैट मीन्स वी डिफरेंशिएट. अब जैसे मीन है, तो फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं मीन. तो सैंपल का मीन होगा, उसे एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और पॉपुलेशन का मीन होगा, वो स्टैंडर्ड हो गया म्यू. वेरिएंस है, वेरिएंस यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे हम इससे एस स्क्वायर से, और इधर वेरिएंस कैसे होगा? सिग्मा स्क्वायर से. ओके, सो पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन इनटू फॉर्म ऑफ सिग्मा स्क्वायर, और सैंपल वेरिएंस वी टेक एज एस स्क्वायर. सो वी राइट डाउन एज फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार एज मीन. अब सैंपल के लिए एक्स बार मीन होगा, एक्स बार मीन, एंड एस स्क्वायर एज ए वेरिएंस when we draw a sample from normal population. From normal population. Normal population with, we write down as mean mu and variance sigma square. We follow the normal distribution. So now we write down as
let x1, x2, xn be the sample size n from the normal population from the normal population. So then the chi-square distribution, yeah, sampling distribution statistic we denote it as chi-square, which is n s square upon sigma square. So this can be written as summation of x minus x bar to the whole square upon sigma square with n minus 1 degree of freedom. So can we represent it as follow the chi-square distribution with n minus 1 degree of freedom. अब degree of freedom, so we are free to take n minus 1 out of n. So now, what are the properties of this distribution? So basically, we move to the properties. So properties of chi-square. So first, this distribution chi-square basically lie in the first quadrant because the random variable x lie in first quadrant. Second, the range of chi-square distribution is 0 to infinity. So 0 to infinity. Now, this distribution has a unique mode, single mode. So that means unimodal curve. So unimodal curve. This distribution, that means fourth property, chi-square has only one parameter, that is n. और वही क्या represent करता है, which is its degree of freedom. Its degree of freedom. And now fifth point, the mean and variance. Mean and variance of chi-square with n degree of freedom is, we write on a mean is equal to n and variance is equal to 2n. So mean equal to n और variance equal to 2n. तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी जब लिखना होगा आपको तो वो क्या हो जाएगा, √2n. तो वी हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग. अगर इसी में अगर आपको मोड भी चेक करना है इसका, तो मोड इज ऑल्सो इक्वल टू n माइनस टू. तो मोड इसका n माइनस टू हो जाएगा. और अगर स्क्यूनेस कैलकुलेट करनी है तो स्क्यूनेस क्या होगी इस डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. तो कैलकुलेट कर सकते हैं इसका स्क्यूनेस. तो मीन कितना है हमारा n है, मोड क्या है n माइनस टू है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया हमारा √2n हो गया. तो यहाँ से क्या होगा, n टू n कैंसिल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, तो 2 अपॉन
√2n हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा हमारा √2/n। तो ये क्या होगी इसकी स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ after writing the properties we move to the testing. So test based on chi-square distribution. So we write down as test based on chi-square distribution. ये symbol है chi-square. Okay. So chi-square distribution. So where we use this chi-square distribution. So first we have a testing of significance. Test of significance for population variance. Population variance. तो ये पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा हम कहाँ यूज करते हैं इसे? टेस्टिंग ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट। और तीसरा यूज कहाँ होगा इसका? टेस्टिंग द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स। Two attributes. So these are the tests, basic tests for chi-square. So now we start the first part. So first part is test the significance for population variance. Test the significance for population variance. Population variance. So now we write down as let a sample, random sample of size n we draw from a normal population, with mean mu and variance sigma square, and sigma square is unknown. Sigma square is unknown. So then we set the null hypothesis. So there are two hypotheses we have. One is null hypothesis or second is alternative hypothesis. Null hypothesis always denoted by H naught. So null hypothesis we denoted by H naught, and alternate means opposite of the null hypothesis. So this is H naught, or H naught we consider on the basis of the variance. So sigma square equal to sigma naught square. So यहाँ पर पॉपुलेशन वेरिएंस, अब क्योंकि हम पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट हमारा, सो पॉपुलेशन वेरिएंस, so here we consider is sigma naught square is the population variance, means आपको वैल्यू दे रखी होगी 4, 6, 8, 10। so what is the chi-square test here? So the chi-square is x minus x bar to the whole square upon sigma square. Sigma square means sigma naught square. So that is the given value. So this is follow the chi-square n minus 1 degree of freedom. So degree of freedoms. अब इसके लिए भी हमको किसकी जरूरत होगी? टेबल की जरूरत पड़ेगी chi square डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसके लिए भी यूज द टेबल। तो टेबल फॉर chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल थी नॉर्मल टेबल, ऐसे सेम chi स्क्वायर। सो नाउ वी टॉक अबाउट दिस hypothesis. So we are setting the null hypothesis, and we have to check if the value of chi
काई स्क्वायर मीन्स ये जो वैल्यू है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर वो कैलकुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर n-1 मतलब ये n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से कम आती है, ये जो वैल्यू हो गई इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज अवर कैलकुलेटेड वैल्यू, इसको तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, और ये वैल्यू हो गई हमारी टेबुलर वैल्यू। तो कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबुलर वैल्यू क्या होंगे, ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो tabular value. So in this case we accept the null hypothesis. So here we accept the null hypothesis. उस केस में null hypothesis accept होगी। और second, if the value of chi square means calculated value अगर greater than जाती है किससे, n-1 degree of freedom से, so we reject the null hypothesis. तो null hypothesis reject होगी तो क्या होगा, फिर alternative accept accept null, reject the null hypothesis. So now we take one question based on this. So we write down the statement of the question. A random sample of size 25 from a normal population, from a normal population gives the sample standard deviation is 9. ये क्या है, sample standard deviation, not population standard deviation. So test the hypothesis, test the hypothesis that the population standard deviation, that the population, अब यहाँ पर दे रखा है population standard deviation is 10.5. So as per the statement we do the solution. So for doing the solution, so first we take the null hypothesis. So first we write down the values as given, n size हो गया n is equal to 25, और sample standard deviation, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन मींस एस इज इक्वल टू 9 हो गया, तो सैंपल वेरिएंस कितना हो गया, 9 9 से 81। ओके, सो नाउ वी सेट द नल हाइपोथेसिस, तो वी सेट द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस जो दे रखा है उसी के बेसिस पे हम उसको लिखते हैं। क्या दे रखा है, हम मान के चल रहे हैं कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड वेरिएशन हमारा कितना है, 10.5 है। तो दिस इज एच नॉट, और एच नॉट इक्वल टू मीन्स एच नॉट क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, और सिग्मा नॉट स्क्वायर क्या है हमारा, 10.5 टू द स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 10.5, जब वेरिएंस निकालेंगे तो 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो 10.5 टू द स्क्वायर है। ओके, अगर इसको फॉलो कर रहा है तो भी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस, अदरवाइज भी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। सो नाउ वी कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। So when we calculate the test statistic, this means chi square equal to summation of x minus x bar to the whole square upon sigma naught square. So this is equal to, so this equal to, so we write down the value of this. So this value will equal to, that means ns square upon, so this value is equal to ns square upon sigma naught square. तो एन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा नॉट स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू एन इक्वल टू कितना हमारा 25 है, और ये एस स्क्वायर कितना है 81 है, और ये कितना है हमारा 10.5 टू द स्क्वायर। So 10.5 to the square. So we have to calculate the value of this. So when we calculate the value, so this gives us 18.36, 18.36। अब यहाँ पे आपको पता ही होगा एस स्क्वायर की क्या वैल्यू हो गई, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ
x minus x bar to the whole square upon n. So we write down ns square only. So we have to check the degree of freedom. So degree of freedom which is n minus 1 और सैंपल साइज क्या है 25 और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी हमारी दिस इज 24. सो 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हम टेबुलर वैल्यू चेक करेंगे. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एट 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम. So you can write down here as 25 minus 1 because we see that n minus 1. So we write down as n minus 1. So this is काई स्क्वायर इंटू 24. तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ से चेक करनी है हमें टेबल से. तो इसकी जो वैल्यू ये होगी टेबुलर वैल्यू. तो टेबुलर वैल्यू इसकी है हमारी 36.415. अब ये वैल्यू चेक करते हैं कि जो टेबुलर वैल्यू है और वो कैलकुलेटेड वैल्यू जो आ रही है हमारी टेबुलर वैल्यू से कम आ रही है नहीं आ रही है. तो यहाँ पर जो हमने काई स्क्वायर निकाला है काई स्क्वायर कितना हमारा 18.36 है जो कि लेस देन है काई स्क्वायर एन माइनस वन से. काई स्क्वायर एन माइनस वन कितना है हमारा 36.415. तो वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस. सो वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जो स्टेटमेंट है कि वो जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10.5 भी है उसका. तो हेंस द पॉपुलेशन standard deviation is 10.5 is 10.5.